प्रिय बच्चों, आज हम 6वीं कक्षा का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि 6वीं कक्षा में कौन कौन से पाठ होते हैं, पहले देखेंगे फिर अभ्यास शुरू करेंगे। तो यहाँ अनुक्रमणिका पेश है। तो पहला संरचक रेखाएं, 2 वर्णमाला, 3 पढ़ो समझो और लिखो। इनमें से स्वर और व्यंजनाक्षर आते हैं। और नंबर 4 स्वर और उनकी मात्राएं हैं। और नंबर 5 र की मात्राएं। नंबर 6 संयुक्ताक्षर है। और नंबर 7 गिनती। यहाँ गिनती का अभ्यास है 1 से 20 तक। और नंबर 8 मैं, हम, तू, तुम, आप। इन अक्षरों को इस्तेमाल करके वाक्य रचना करना है। और नंबर 9 में यह, एक, वह, वे। यहाँ एक वचन और बहुवचन का वाक्य आते हैं। और नंबर 10 का है मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा। और नंबर 11 इसका, इनका, उसका, उनका। और नंबर 12 का, की, के का प्रयोग करके हमें अभ्यास करना है। तो यहाँ 1 से नंबर 12 तक पहला सेमेस्टर का हम अभ्यास करने का जो पाठ है। और आगे का जो नंबर 13 से 25 तक पाठ है वो दूसरे सेमेस्टर का, द्वितीय सेमेस्टर का पाठ है। तो हम शुरू करेंगे पहला सेमेस्टर का अभ्यास का पहला पाठ 6वीं कक्षा के लिए संरचक रेखाएं। अभ्यास या पाठ 1 संरचक रेखाएं। संरचक रेखाएं 6वीं कक्षा के लिए पहला पाठ है। संरचक रेखाएं क्यों अभ्यास करते हैं? तो इसलिए अभ्यास करने से पूर्व हमें संरचक रेखाओं को अभ्यास करके अक्षरों को हम कैसे लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इन संरचक रेखाओं से हमें अक्षरों का शुरुआत होते हैं। तो बच्चों देखिए, अक्षरों की लिखावट से पूर्व हमें क्या करना है? ये संरचक रेखाओं का अभ्यास करना है। तो पहले ये देखिए संरचक रेखाएं। तो संरचक रेखाओं में 3 भाग आते हैं। पहला भाग में देखो, देखो इसका अर्थ है ರೇಖೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋದು। दूसरे भाग में आते हैं कलम से लिखो। तो पहले भाग में हम जो देखते हैं रेखाओं, तो दूसरे भाग में हमें कलम से लिखना है। और तीसरे भाग है फिर से लिखो। तो पहला भाग में जो संरचक रेखाएं देखते हैं, फिर दूसरे विभाग में हम संरचक रेखाओं को कलम से लिखते हैं। वैसे ही तीसरे विभाग में देखकर लिखते हैं, वही संरचक रेखाओं को हमें फिर से तीसरे भाग में हमें लिखना है। तो यहाँ देखिए, आप किताब खोलिए, आपके पास किताब है तो वहाँ पहला पाठ होते हैं संरचक रेखाएं। तो यहाँ 3 विभाग हैं। पहला है देखो और दूसरी विभाग है कलम से लिखो, कलम से लिखो। और तीसरी विभाग है फिर से लिखो, फिर से लिखो। ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಸಂರಚಕ ರೇಖಾಯಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂರಚಕ ರೇಖೆಗಳನ್ನ, ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಸಂರಚಕ ರೇಖೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವೇ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸಂರಚಕ ರೇಖೆಗಳನ್ನ, ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ರೇಖೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು। ರೇಖೆಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಕ್ಷರ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಸಂರಚಕ ರೇಖೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಷರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂರಚಕ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಭಾಗಗಳು ಬರ್ತವೆ। ಒಂದು देखो, कलम से लिखो और फिर से लिखो। तो देखो, यहाँ पहला पेज में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संरचक रेखाएं।
संरचक रेखाएं देखेंगे हम। तो पहला संरचक रेखाएं, ये है पहला संरचक ರೇಖಾಯೇ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಸಂರಚಕ ರೇಖೆಯನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಸ್ಪೆನ್ಸಿಲು ಅಥವಾ ಪೆನ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೀತೀವಿ। ಕಲಂ ಸೆ ಲಿಖೋ ಈ ವಿಭಾಗ ಒಳಗೆ ಬರೀತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಫಿರ್ ಸೆ ಲಿಖಿಯೇ। तो हम लिखे हैं इस संरचक रेखाओं को हम कहते हैं आड़ी रेखा। क्या कहते हैं? आड़ी रेखा। ये है पहला संरचक रेखा है, तो इसको हम कहते हैं आड़ी रेखा। और दूसरा रेखाएं है 1 2 3, और फिर से दूसरे विभाग में लिखिए 1 2 3, और फिर से तीसरे विभाग में 1 2 3। तो इस रेखाओं को हम कहते हैं खड़ी रेखा। खड़ी रेखा। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಖೆಗೆ ಅಡ್ಡ ರೇಖೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। ನಾವು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಬರಿತೇವೆ ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಈ ಒಂದು ರೇಖೆಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಆಡಿ ರೇಖಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ರೇಖೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಖಡಿ ರೇಖಾ। ಖಡಿ ರೇಖಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದ್ದ ರೇಖೆಗಳು, ನಾವು ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಏನಂತೀವಿ, ಖಡಿ ರೇಖಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಸಂರಚಕ ರೇಖಾಯೇ 1 ಮೂರನೇ संरचक रेखाएं 1 2 3, और फिर से दूसरे विभाग में 1 संरचक रेखाएं 2 और नंबर 3 संरचक रेखाएं। तो हम देखकर जो दूसरे विभाग में कलम से लिखते हैं तो वही संरचक रेखाएं तीसरे विभाग में, इन्हें फिर से लिखो, इस विभाग में हमें लिखना है। तो 1 2 3। तो तीसरी संरचक रेखाओं को हम कहते हैं तिरछी रेखा। क्या कहते हैं? तिरछी रेखा। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಸಂರಚಕ ರೇಖೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ರೇಖೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಏನಂತೀವಿ, ತಿರ್ಚಿ ರೇಖಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ತಿರ್ಚಿ ರೇಖಾ ಬರ್ತದೆ। 1 2 3 पहले विभाग में और दूसरे विभाग में 1 2 3, और फिर से हमें और एक बार लिखना है 1 2 और 3। तो ये भी है तिरछी रेखा। इस रेखा को भी हम कहते हैं तिरछी रेखा। ಈ ರೇಖೆಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ತಿರ್ಚಿ ರೇಖಾ ಅಂತ ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಕರೀತೀವಿ। ಏನಂತೀವಿ? ತಿರ್ಚಿ ರೇಖಾ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಐದನೇದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂರಚಕ ರೇಖೆ ಆಧಾ ಗೋಲ್। ये है आधा गोल संरचक रेखाएं, पहला और दूसरा संरचक रेखाएं। तो फिर से और एक बार लिखिए, दूसरे विभाग में संरचक रेखाएं आधा गोल, और तीसरे विभाग में आधा गोल संरचक रेखाएं। तो यहाँ एक छोटी संरचक रेखाएं हैं और एक बड़ी। ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೇಖೆಗಳು ಸಣ್ಣದವು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂರಚಕ ರೇಖೆಗಳು ದೊಡ್ಡದವು। ಕೆಲವೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅರ್ಧ ಗೋಲಾಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಧ ಗೋಲಾಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ತಗೊಂಡಿವಿ, ಸಣ್ಣ ಸಂರಚಕ ರೇಖಾಯಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಂರಚಕ ರೇಖಾಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿವಿ। ಇನ್ನು ಇದಾದ ನಂತರ और एक संरचक रेखाएं हैं 1 2 1
पर एक संरक्षक रेखाएं और एक बड़ा संरक्षक रेखाएं, और तीसरे विभाग में भी एक छोटी संरक्षक रेखाएं और एक बड़ा संरक्षक रेखाएं। और अगले जो अर्धगोला एक संरक्षक रेखाएं हैं, तो पहले विभाग में हम देखकर जो दूसरे विभाग में लिखते हैं वैसे ही पहले और दूसरे विभाग में लिखकर और फिर से हम क्या करते हैं, तीसरे विभाग में भी लिखते हैं। ये हैं संरक्षक रेखाएं। तो ಸಂರಕ್ಷಕ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಕ ರೇಖೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಧಗೋಲಾಕಾರ ರೇಖೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇದರ ಮುಂದಗಡೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಧಾ ಗೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆಧಾ ಗೋಲ್, ಆಧಾ ಗೋಲ್ ಸಂರಕ್ಷಕ ರೇಖಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಆಡಿ ರೇಖಾ ಸಂರಕ್ಷಕ ರೇಖಾಯಿ, ಇದು खड़ी रेखा संरक्षक रेखाएं, ಇದು ತಿರ್ಚಿ ರೇಖಾ ಸಂರಕ್ಷಕ ರೇಖಾएं, ಇದು ತಿರ್ಚಿ ರೇಖಾ, ಇದು ಆಧಾ ಗೋಲ್, ಇದು ಆಧಾ ಗೋಲ್, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಧಾ ಗೋಲ್ ಸಂರಕ್ಷಕ ರೇಖಾएं ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಬಡಿ ಆಧಾ ಗೋಲ್ ಸಂರಕ್ಷಕ ರೇಖಾएं. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂರಕ್ಷಕ ರೇಖಾएं ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಕ ರೇಖಾಯಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸಂರಕ್ಷಕ ರೇಖೆಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಅದರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇನ್ನೂ 2 ಸಂರಕ್ಷಕ ರೇಖೆಗಳು ಅದಾವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. बड़ा आधा गोल, देखो इस कलम में बड़ा आधा गोल, और फिर से कलम से लिखिए और एक बार पूर्ण आधा गोल, और फिर से और एक बार पूर्ण आधा गोल, दो बार लिखिए. फिर से लिखिए इस विभाग में पूर्ण आधा गोल ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂರಕ್ಷಕ ರೇಖೆ ಒಳಗ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕಾರದ ಒಂದು ರೇಖೆಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೊನೆ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಕ ರೇಖಾएं पूर्ण आधा गोल, दूसरे विभाग में और तीसरे विभाग में. तो इन दोनों संरक्षक रेखाओं को हम कहते हैं बड़ा आधा गोल. ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದಂತ ಸಂರಕ್ಷಕ ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐತಿ. ಅವು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ, ಇದು ಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ, ರೌಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಡ ಆಧಾ ಗೋಲ್, ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕಾರದ ಸಂರಕ್ಷಕ ರೇಖೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮನೆ ಒಳಗ ಸಂರಕ್ಷಕ ರೇಖಾಯಿ ಈ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠವನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಳ್ರಿ, ಪುಸ್ತಕ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಾಗ ಬರೆಯೋದಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಿಂದ ಬರಿಬೇಕು. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂರಕ್ಷಕ ರೇಖೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಂರಕ್ಷಕ ರೇಖೆಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.